in 1902 they established Remount Depot Mona. ये वाहद इंस्टॉलेशन है जो आज तक 121 साल से उसी झील से काम कर रही है, फुल्ली ऑपरेशनल है। और पूरी दुनिया में जितनी वर्सटैलिटी इन इक्वाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीडिंग टू रेयरिंग एंड देन द ट्रेनिंग, जो ये डेपो काम कर रहा है, कोई भी इस तरह का और इदारा नहीं है इस वक्त। The known breeds of horses, the most ancient breed that is known as the Arab horses, which was originated 2500 BC from the Arab Peninsula, and this is the honor for Pakistan Army and Remount Depot Mona that World Arabian Horse Organization, that is WAHO, whose headquarters is in the London, England. Remount Depot Mona is the sole representative in Pakistan. We are having 808 Arab horses which are registered with WAHO, out of which 627 animals are only from Remount Depot Mona. जब ब्रिटिश रूल इंडो पाक पे हुआ था तो उस वक़्त कैवेलरी यूनिट्स बेसिकली होती थी, घोड़ों के ऊपर जंगें होती थी, और ब्रिटिश यूज टू इम्पोर्ट द हॉर्सेस फ्राम इंग्लैंड, फ्रांस से भी करते थे, यूएसए से भी करते थे, वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। इन 1892 में एक रॉयल कमीशन बना हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल कि हम सर्टन करें कि कैसे यहीं पे हम अपनी ब्रीडिंग और एनिमल्स की रेलिंग कर सकते हैं रिमाउंट डेपोज की। वो 10 साल तक वो पूरे इंडो पाक पे फिरता रहा एंड द बेस्ट सूटेबल प्लेस उनको जो मिली वो ये मोना वाली जगह थी। द स्पेशलिटी ऑफ मोना, दिस इज अ लिविंग एनिमल किंगडम फॉर इक्वाइन्स इन द होल वर्ल्ड। देयर वाज ए विलेज मोना सजदा, and they decided at that time 10,000 acres land that were designated for establishment of this depot. If Pakistani government or army, they want to present them any gift of horse, that is sure that is taken from the Remount Depot Mona. And up till now 36 animals have been presented to different heads of states including Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bangladesh, Sri Lanka and some other countries.